So we'll want to start with question 1. Dilute sulfuric acid, brown colored vapors. I did tell you in the theory class, dilute sulfuric acid and something colored is directly an indication of an acidic radical. What is that radical? Quickly, Nitrite. dilute sulfuric acid, brown colored vapors, is of nitrogen dioxide. It's a direct indication of nitrite. Remember, nitrate will be, the case with concentrated sulfuric acid. So I've got the acidic radical from the first statement. What's the second statement giving me? Remember this, any ammonium salt with any alkali will give me ammonia. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. So it's indicating ammonium, and naturally with the first two statements, I'll get ammonium nitrite, something I speak very specifically in the class, the heating effect of ammonium nitrite. Simple, you remove 2 moles of water, and what you get is nitrogen. So this is B and C. At the temperature of heating, this would be gaseous as well. The inert gas would certainly be nitrogen, so this would be B. And liquid at room temperature is water, C. So compound A is ammonium nitrite, B is nitrogen, the inert gas, C is the liquid at room temperature, which is water, and will want to move at a faster pace than this. You'll want to respond, it will help. Question 2. A colorless solid, aqueous solution of A and B turns blue litmus red. What does it indicate? Acidic. C turns red litmus blue. Basic. Heating effect. I hope I'm being understood. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. It gives a white PVT with silver nitrate soluble in aqueous solution of C. A white precipitate with silver nitrate is so many times AgCl, soluble in aqueous solution of C, which is basic. So this would tell you that this is very much possibly ammonia. This is going to give you a complex of this kind. Please respond with a yes or no. I know AgCl to be something soluble in ammonia or ammonium hydroxide. So Cl minus, and on heating it's giving you ammonia. So this could very well be ammonium chloride. Now ammonium chloride being a salt of strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base will be acidic. The hydrolysis will give you HCl and ammonium hydroxide, which is acidic. B, which is acidic, is certainly about HCl, which is acidic. Ammonium salts are thermally labile, so this is very much C ammonia, 2 is ammonium chloride. Please keep responding. We'll want to move on. Compound 3. I'll want to hear from some of you. Dilute sulfuric acid, B plus C light green. Lead acetate black is confirmatory lead sulfide, which confirmatory is about B being H2S and A being a sulfide. Naturally, dilute sulfuric acid will confirm it. All the black sulfides I know are copper sulfide, iron sulfide, mercury sulfide, but this light green will help me because green means, it could very well be a ferrous salt. Ferrous salts are green, and ferrous sulfide black will also help. Also remember, in due course, in the past or in due course of time, every time you come to know about H2S in more details, trust me, there is also the lab method of preparing H2S. So out of so many sulfides which could be black, I'll go with ferrous sulfide because it's black. It's also the lab method of preparing H2S, and light green could be very well the ferrous compound. Ferrous sulfate is green. Ferrous salts are green. I'm still to hear from some of you. You're responding would kind of help. Question 4, I hope it's all visible. And, I'll share the recording with you as well. I'll want to move at a little faster pace than normal. Please respond with a yes or no. What do you know about gas B, which turns K2CR27 green? In a one-liner, in a one word rather. Sulfur dioxide. It's a reducing agent. This is what I want to hear. Reducing agent could be H2S or sulfur dioxide. It could be H2S or sulfur dioxide. Barium chloride, a white precipitate, is always barium sulfate. Now, this is an interesting case. After removing S with bromine water, which is an oxidizing agent, you again get barium sulfate. It does not tell you anything about the cation. It tells you that it's a mixture of sulfite and sulfate.
This particular question is about, only the acidic radical. It does not tell you about the reducing the cation, because the gas here is certainly SO2. Barium sulfate and SO2 would come initially from a sulfide. So A certainly contains sulfide. Now, sulfide will not give you barium sulfate. It has to contain sulfate as well for it to give you barium sulfate. It's more or less like the situation we had in carbonate and bicarbonate. You remember mixture of carbonate, bicarbonate in the theory class I have told you. If you have a mixture of carbonate and bicarbonate, how do you confirm this? Initially, with a salt like barium or a precipitate with strontium, you get a carbonate, which is say barium carbonate, strontium carbonate, calcium carbonate. It's a precipitate, and if you filter it out, this will be in the filtrate. Now the filtrate on heating, again giving you a carbonate, is about bicarbonate giving you a carbonate. So it was a case with carbonate bicarbonate mixture in the theory class. Here you get a filtrate, which is a sulfate, and on removing the sulfate, on bromine water, which is oxidizing agent, it will again oxidize sulfide to sulfate. So basically A contains both sulfite and sulfate. This tells you only about the acidic radical here, which is a mixture of sulfite and sulfate. We'll want to move to question 5. I hope I am being understood. I want to move at a faster pace. Something insoluble in ammonia, with ammonia becoming insoluble in water, with ammonia becoming black. Quickly. Dissolving in aqua regia. Quickly. Directly from our discussion. Naturally, the soluble stuff will be HgCl2. It's a compound which is insoluble in ammonia. Again, HgI2 is a red precipitate, scarlet red, and it will become K2HgI4, which is an active component of Nessler's reagent. This is how you get Nessler's reagent in real life. You initially get a precipitate of HgI2. You initially get a precipitate of HgI2, which is certainly scarlet red, and with excess of Ki, you get K2HgI4. I'll talk more about it when the time is right, but this is something which I've discussed in the theory class. Nessler's reagent, this is how Nessler's reagent is prepared. You want it to be alkaline, so you will mix a little of KOH to make it Nessler's reagent. And naturally, although it's not enough for me to give you a test of sulfide, but this could very well be a sulfide because it's an insoluble mercury salt which dissolves in ammonia, and I'll go with my experience in acidic radical, which is about, group 2 sulfide, which is insoluble in ammonia, which is insoluble in water, but gives you something black. फिर ये ब्लैक जो आता है ये भी मैं लिखवाया हूं ना Hg प्लस HgNH2Cl, याद है ना, ये दो कंपाउंड की वजह से होता है. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. ये Hg2Cl2 होगा, सॉरी, ये Hg2Cl2 होगा, ये ग्रुप 1 प्रेसिपिटेट होगा. ये ग्रुप 1 का हम लोग का पूरा सीक्वेंस है, याद है. लेट सिल्वर मर्करी में ऐसे ही करते थे. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. विल वांट टू मूव फास्टर देन दिस. I hope you're all there with me. You will want to move faster than this. Question 6. I mean, you will be able to respond to this only if you have seen the video class. If you have seen the theory class, I correct. It's not a sulfide, it's a chloride in group 1, which with ammonia was giving you a mixture of two compounds, which was black and was dissolving in aqua regia. Aqua regia में active component होता है nascent chlorine. तो जो dissolve करता है वो हमेशा HgCl2 होता है. HgCl2 Ki के साथ में scarlet red with excess of Ki becoming soluble is how you prepare Nessler's reagent. Question 5, question 6, quickly. It's a chromate. It's a chromate. दो chromate हम लोग पढ़ते हैं. येलो chromate हम लोग दो ही पढ़ते हैं precipitate basically. मैं खुद पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ. दिस नॉट what I like. Hey, which is A and which is B? A is certainly PbCl2, which is soluble in hot water. B certainly is BaCl2. Because barium will give you an after test. And PbCl2, both are yellow, you know that. Is the one which is soluble in hot water. Barium will give you a green coloring flake. You have a doubt, you have a question, you can stop me, else we'll want to move on. Question 7, बच्चे लोग. I'm waiting for a while so that you can respond. You can give me the answer right away.
Again, I want you to be responding, Finally, what is this test? What is this test? This confirms? Yes, please. ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है बच्चे लोग? ब्राउन रे. Yes, please. Nitrate. So lead और nitrate है, ये सब मैं खुद ही कर रहा हूँ. I want you to be responding, with more maturity. Lead nitrate. ये कंफर्मेटरी लेड का है, soluble in hot water. KiPBi2, PbCl2 is soluble in hot water. नाइट्रेट का टेस्ट है, लेड नाइट्रेट. ये सब कुछ हो चुका है क्लास में, थ्योरी क्लास में पता होना चाहिए. 8 is a nice problem. 8 is a good problem. I'll give you half a minute to read it. Question 8, some of you would have solved it. Question 8. Yes, please. Question 8. What is this particular test? K2Cr2O7, concentrate sulfuric acid. What is this compound B? Quickly. Chromium chloride. Chromyl chloride. CrO2Cl2, chromyl chloride. You can tell me your name as well. You're doing good. What is this yellow precipitate? ये सारा का सारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. ये सारा का सारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है? Cl माइनस का. तो ये BCD जो आया ना, ये क्लोराइड का टेस्ट है. ये क्लोराइड का टेस्ट है. और ये क्लोराइड कहां से आया? यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड में क्रोमियम कहां से आया? क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम आया यहाँ पे K2Cr2O7 से. ये टेस्ट है क्लोराइड का. और CrO2Cl2 में क्रोमियम, क्रोमेट में क्रोमियम, ये सब है K2Cr2O7 से. अब यहां पर ध्यान से सुनो, ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी वाइटल. यहां पर कहीं पर क्रोमियम नहीं है. ये क्रोमियम क्लोराइड आया था K2Cr2O7 से, यहां पे कहीं क्रोमियम नहीं है. पर अगर वापस NaOH और ब्रोमीन वाटर से यहां पर C आता है, विच यू नो इज सोडियम क्रोमेट, तो दिस विल इंडिकेट कि कटायन क्या है इसका. देखो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे टेस्ट क्लोराइड का है, क्रोमाइल क्लोराइड है, सारा क्रोमेट क्रोमेट है. पर ये सब कुछ हटा दिया, उसको फिल्टर करके निकाल दिया, उसके बाद में यहाँ पर कोई क्रोमियम नहीं है. अगर यहाँ पर बिना क्रोमियम के क्रोमेट आता है, तो याद करो ये क्रोमियम का टेस्ट ग्रुप 3 में, यहाँ से जो हम लोग सोडियम क्रोमेट निकालते थे, इवेंचुअली डिसॉल्व करते थे. इसका मतलब कटायन में भी क्रोमियम है. एंड इवेंचुअली ए क्या होगा? क्विकली समबडी विल टेल मी योर नेम अलोंग विद द आंसर. क्विकली. यस प्लीज. व्हाट इज द फाइनल आंसर? कंपाउंड ए इज yes, who will tell me? CrCl3. CrCl3 is fine. I was waiting for a long period of time. I think, I've given you the entire situation. You'll want to respond with some maturity. Priyanshu, दूसरे बात तो. Priyanshu, Yes, sir. Yes, sir. Aryan, good to see you people joining from Barakpur. So, chalo, CrCl3. You can read the answer. Question 9, quickly. Question 9. ये पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ KI लेड एसिड को ब्लैक करता है. ये ब्लैक कंपाउंड क्या है? बोलते जाओ यार, ये ब्लैक क्या है? ये ब्लैक सी मान से लेके क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है. गैस कौन सा है? क्विकली. Lead sulfide. तो गैस कौन सा हुआ? H2S. और यहाँ पर ये समथिंग प्रेसिपिटेट विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ KI. You'll want to go with HgCl. yes please. HgCl2. HgCl2 प्रेसिपिटेट नहीं होता है लिक्विड. बोलिए. HgCl देखो, जैसे Hg होता है ना, वैसे ही Pb भी होता है. ये मेरे को लग रहा है PbCl2 है. Cl2 आता है, PbCl2 with PbI4 बनता है. So lead sulfide is also black.
तुमको पता है मैं जी बोल रहा हूँ, मैं इसको एचजीएफ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये तो सिलेबल होता। बात समझ में आ रहा है? नहीं, पर ये एचजीसीएल टू हो सकता है बिकॉज वो के के साथ में प्रेसिपिटेट है। ये एचजी भी होगा, एचजीसी होगा। हम लोग पीवी का बात नहीं करते हैं, इसको एचजीआई2 रखते हैं, इसको के2 एचजीआई4 ही रखते हैं। अभी लेड का बात नहीं करते हैं, अभी इसको एचजी रखते हैं, ठीक है? अभी इसको एचजीएसी रखते हैं। तो चलो अभी इसको एचजीएसी रखते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है वो केआई के साथ में प्रेसिपिटेट एचजीआई2 का है। एक्चुअली लेड का टेस्ट इसीलिए I will tell you this maybe in classes to come, but अभी इसको will not want to keep it लेड और मर्करी का ये एक प्रॉपर्टी कॉमन है। लेड आयोडाइड और मर्करी आयोडाइड दोनों का प्रेसिपिटेट होता है और दोनों के में सोल्यूबल होता है। बट अभी तक फॉर द टाइम बीइंग आई केप्ट इट लाइक मर्करी ओनली। K2HgI4 और K2PgI4 में जो डिफरेंस है थोड़ा बाद में देखेंगे। इट्स टेकिंग हार्ड टाइम टू रब इट ऑफ, बट अभी फिलहाल इसको PgI2 रखते हैं, सॉरी HgI2 रखते हैं। अब इसको HgI2 रखते हैं, अब इसको K2HgI4 रखते हैं, ठीक है? अभी इसको HgAC रखते हैं, इसको H2AC रखते हैं और इसको PbAC रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 इज ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन 10 विजिबल? I just want to print it so that it's readable. I think it's readable now. Is it readable now? Colorless solution, white PPT with NaOH dissolves in excess of NaOH, forming C. C does not give a precipitate with H2S with its NS form ammonium chloride. White PPT appears again. Yellow PPT with AgLO3. ये जो लास्ट लाइन है ना, ये जो लास्ट लाइन है ना, इससे क्या मालूम चलता है बोलो? जी बी Br माइनस, मतलब ये AgBr है। तो ये ब्रोमाइड है तो पता चल गया। Something forming a precipitate with NaOH is a hydroxide. So B is a hydroxide और excess NaOH में dissolve करता है ना, so it could be a zincate, it could be a aluminate, it could be a stannate, it could be a plumbate, it could be a chromate। वो अलग बात है, stannate, plumbate और chromate के लिए थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब चाहिए होता है। पर NaOH में प्रेसिपिटेट और उसके बाद में डिसॉल्व करने जिंकेट, एल्यूमिनेट, स्टैनेट, प्लम्बेट, क्रोमेट, उसमें जिंक और एल्यूमिनियम सबसे पहले खोजते हैं। अब जिंक और एल्यूमिनियम में ना डिफरेंशिएटर क्या है मालूम है? अगर H2S के साथ में प्रेसिपिटेट देता तो जिंक होता, ये प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा मतलब जिंक सल्फाइड नहीं है। और अमोनियम क्लोराइड डालने से वो प्रेसिपिटेट देता है मतलब वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। याद है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाज द प्रेसिपिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड ग्रुप C का हाइड्रोक्साइड था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और NH4OH के साथ में प्रेसिपिटेट दे रहा है अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो वो BA होगा। और यहां से मेरे को A मिल जाएगा AlBr3। रिमेंबर ये मेन बात है, H2S के साथ में प्रेसिपिटेट अगर देता तो जिंक होता। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों NaOH के साथ में हाइड्रोक्साइड देगा और जिंक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों NaOH में डिसॉल्व करेगा। आई थिंक आई एम बीइंग अंडरस्टूड। Br माइनस का टेस्ट तो लास्ट वाला है। अब ये जिंक ब्रोमाइड एक एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, ये इसी से पता चलता है कि ये जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं देता है। आई रिपीट, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों का दोनों हाइड्रोक्साइड होता और दोनों का दोनों एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में तुमको सोडियम जिंकेट और एल्यूमिनेट देता। एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में प्रेसिपिटेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट पहले सोचते हैं और उसके बाद में फिर क्रोमेट, स्टैनेट, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी जिंक और एल्यूमिनियम में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? जिंक और एल्यूमिनियम में बेसिक डिफरेंस वही होगा जो मैं बताया। जिंक और एल्यूमिनियम में बेसिक डिफरेंस वही होगा जो मैं बताया। जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक सल्फाइड निकलता है, प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट दे रहा है विद अमोनियम क्लोराइड। ये ग्रुप C का रिएजेंट है, अमोनियम क्लोराइड विद OH माइनस, तो ये B है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और A हो गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। 11 देखते हैं बच्चे लोग।
जो को प्रेसिपिटेट दे दिया। सेम कहानी है, जो व्हाइट पीपीटी दे रहा है सिल्वर अमोनिया तो AgCl हो गया। अब सी दे रहे हैं उसके साथ में वापस जिंक हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि डी जो है वो सोडियम जिंकेट भी हो सकता है और सोडियम एल्यूमिनेट भी हो सकता है। अब ये जिंक है क्योंकि ये जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट दे दिया, बताया ना अभी। तो ये जिंक है तो जिंक हाइड्रोक्साइड है और ये कंपाउंड जिंक क्लोराइड है, ए जिंक क्लोराइड। प्लीज रिस्पॉन्ड विथ yes or no and we'll talk about question 12 now. 12 is also a nice problem. 12 is also a good problem. 12, question 12. I'll give you a minute to read the few statements of question 12. See, I can solve question 12 with the stuff which is given on the board. I think it's pretty readable. 12, anybody who has got it right? Twelve. You know, you want to break a problem into small pieces and stitch them together. It's like breaking a problem into small parts and then stitching them together in the same fabric. So, what is the first thing which you understand from question 12? Quickly. ऑक्सैलेट होगा। ऑक्सलेट से पहले सबसे पहला चीज क्या समझ में आता है? आई थिंक दिस अंडरस्टूड। डी न्यूट्रल है। बी क्या है बोलो? अमोनिया। अमोनिया है क्योंकि ये ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है विच इज HgO। क्या नाम है इसका? बोलो, इसका नाम बोलो, जल्दी बोलो। आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस। कौन बोल रहा है? बच्चे नाम बताओ अपना। आकाश। ये आकाश कौन है? एक आकाश से जो गब्बर सिंह है वही है क्या? हाँ। अरे जियो मेरे दोस्त, क्या बात। गुड टू हियर फ्रॉम यू गब्बर भाई। एनी अमोनियम सॉल्ट विद एनी अल्कली विल गिव यू अमोनिया। तो यहाँ से अमोनियम भी मालूम चल गया। ये अमोनिया क्लियर का टेस्ट है। नेस्ले क्लियरिंग के साथ में ब्राउन पीपीटी देता है GOGNS2I आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस। अभी व्हाइट पीपीटी ना कैल्शियम कार्बोनेट और ऑक्सलेट दोनों हो सकता है, बट MnO4 माइनस को डीकलराइज करता है। इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके अंदर में एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सलेट ही होना चाहिए बिकॉज कार्बोनेट और ऑक्सलेट में दोनों ही व्हाइट होता है। और ऑक्सलेट का कारण एक और भी है कि ऑक्सलेट को हीट करने से, ये बात तो बताया हूँ, हीटिंग इफेक्ट में बताया हूँ, एक PDF भी दे दूंगा मैं हीटिंग इफेक्ट का। ऑक्सलेट को हीट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो, अच्छा ये वो है जो कि टर्म फ्लाइंग वाटर मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म भी होता है। B burns with a blue flame and is fatal if inhaled. कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ में कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, सबको समझ में आता है? यस और नो? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फेटल इफ इनहेल्ड। तो ये अमोनियम का टेस्ट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके आई थिंक आई एम बीइंग अंडरस्टूड। ए ओवरऑल मेरा हो जाएगा अमोनियम ऑक्सलेट। हीटिंग इफेक्ट क्या है बच्चे लोग? अमोनिया देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, जिसमें ये बी है बेसिक, सी है एसिडिक, डी है न्यूट्रल। डी इज बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम एंड इज फेटल इफ इनहेल्ड। यस और नो? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। 13 क्या है? कोई 13? 13-14 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 13-14 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 13, 13, 14, I want to hear from some of you.
13, 14, I want to hear from you people. 13, anyone who has solved it? Naturally, B in both the cases is ammonia. B in both the cases is ammonia, which will tell you it's an ammonium salt. White fumes in both the cases ammonium chloride, yes or no? तो चलो खाना बोलो. Gas used in anesthesia, which is this gas? N2O. N2O. Somebody tells me it's N2O और heating effect समझ में आता है, it's ammonia. नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट से N2O निकलना कितना सिंपल है. यहाँ से 2 मोल पानी निकालो, यहाँ से 2 मोल पानी निकालो, N2O ही बचता है. और यहाँ पर जो डी है, यहाँ पे कभी कभी इसको इनर्ट गैस भी बोलता है. ये जो इनर्ट गैस है ये एल्युमिनियम नाइट्राइड देगा. और कोई भी नाइट्राइड पानी के साथ में अमोनिया देगा, या कोई भी फॉस्फाइड पानी के साथ में फॉस्फीन देगा, या कोई भी आर्सेनाइड पानी के साथ में आर्सीन देगा. ये सब में ना रेडॉक्स में पढ़ाता हूँ कितना बार कि नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड will give you ammonia, phosphine और arsine with water, oxidation number constant and all. अब यहाँ पर जिंक का रोल क्या है? जिंक का रोल ये है कि जिंक और एनिवर्स मिलकर के ना नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं. तो यहाँ पर ये जो भी कंपाउंड बनता है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में वापस अमोनिया देता है, बिकॉज नाइट्राइड भी यहाँ पर अमोनिया देता है. ये रिडक्शन है. और ये नाइट्रोजन दिया है, इसका मतलब ये अमोनियम नाइट्राइट है. यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट है ए, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट ऑन हीटिंग पानी निकाल दो तो यहाँ पर नाइट्रोजन देगा, विच इज कंपाउंड डी. सी दिस इज नाइट्रोजन गैस, ई इज एल्यूमिनियम नाइट्राइट, बी इज अमोनिया, सी सर्टेनली सोडियम नाइट्राइट. ये सोडियम नाइट्राइट या कोई भी नाइट्राइट जिंक और एनएवर के साथ में जो हाइड्रोजन बनता है उससे रिड्यूस करके उसको अमोनिया बनाता है. तो ये सब मैं पहले भी थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ. बी यहाँ पर अमोनिया है, N2O या अमोनियम नाइट्रेट है. Question 15. 15 is also a previous year GE problem. 15 is also a previous year GE problem. Who will tell me? I'm giving you a minute to read the question. You have a white solid X, which on heating is giving you 4.4 gram of an acid gas A, 1.8 gram of a neutral gas B, and a solid Y of a given mass 13.8 gram. A turns lime water milky, B in liquid form changes anhydrous copper sulfate. Now all of this, when you have something like A 4.4 gram, molecular weight of carbon dioxide being 44, would similarly, it would kind of, make you think it's naturally 1.8 ग्राम से 18 वाटर समझ में आएगा. और एक कंपाउंड जो हीट करने से एक रेसिड्यू देता है along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कॉपर सल्फेट को ब्लू कर रहा है, वाटर ही होगा, which is alkaline to litmus, और बेरियम का क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है, so it could very well be barium carbonate. Something which on heating is giving you carbon dioxide, water and a carbonate is certainly going to be a carbonate. Bicarbonate, sorry, a bicarbonate on heating will give you carbonate, carbon dioxide plus water. Please respond to me. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Are you all there with me? ये पुराना जेई का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है. कोई इसको सॉल्व कर पाया है? Does anyone have an answer to this? It's a nice little problem to solve. Rudra, it's been a while. I have not seen you in the class. Same goes for Tanvi. Vansika, you have been responding pretty good in the class so far. Saudi, I don't know which batch you belong to. The rest of you will also want to respond. Akash, Avya, Kanaya, certainly from the Howrah batch. Please respond. Anyone who could solve it? Somebody will want to tell me that you're relating to the situation. That the acid gas, 4.4 gram turning lime water milky is very likely to be carbon dioxide.
and a neutral gas turning copper sulfate blue is very likely to be water. Why? Naturally, it contains carbonate because of barium chloride is giving you barium carbonate. Somebody will want to tell me if you are responding to this situation or not. Please respond with a yes or no. I repeat, please respond with a yes or no. Yes. Now, if I go numerically, 1 mole of carbon dioxide water with the molecular weight being 44 and 18 would come from the metallic bicarbonate, which will be 200.2. Now, if this is 2 moles of this, this will give me the molecular weight of this. The molecular weight of this at 100.1. Let me take it 100 approximately. Minus bicarbonate. Bicarbonate, is 61. 60 plus 1, 61, and this leaves me 39. So this will tell me that M is, the molecular weight here was 100.1, and M with 39 atomic weight is potassium. And this is how I get, this H to be potassium bicarbonate on heating give me potassium carbonate plus carbon dioxide plus water. I wanted people to be better than this, I think I'm finally understood. I repeat, you would have been wanted to be a little more responsible. तो चलो खाना बोलो यो भाई. We'll move to the next question. You can take a screenshot of this. पुराना जीए का प्रॉब्लम है, विद इन रेंज उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है. ये 1.8 4.4 से 1844 जाएंगे तो 20.02 will be 200.2 which will be 2 moles of this. So 1 mole is almost 100 minus 61 will give me 39. So it's potassium bicarbonate. Question 16. The last question of this problem sheet. Question 16. I'll give you a minute for you to, go through the question. Question 16. I repeat, it's all about breaking the problem into small pieces and then, what do you make out of B? Step by step. I'm going to stop after this. This is going to be the last problem for the day. Next problem shall solve at the next opportunity. 16B, what is the white PPT? With barium chloride. Come on, tell me. This is within reach. B is. Last question of the day. I want you people to be a little more responsible. Please go ahead. Tell me what is B. White PPT with barium chloride. Simple as it sounds. A class 9 student will tell me. Come on. Barium sulfate. Finally, somebody. Tell me your name as well. Akash. आकाश बाबू, तुम ही अच्छा काम कर रहे हो यार. बिना मतलब मैं तुमको गब्बर सिंह बोल दिया. तू ही अच्छा बच्चा है, तू ही हीरो है. बाकी लोग गब्बर सिंह है यहाँ पे. सीओडी क्या होना चाहिए दोस्त? CD or E? Akash, come on. Come on. COD क्या होना चाहिए? COD क्या होना चाहिए? SO3 or SO. हाँ? SO3, SO2. Naturally, 2 oxides of sulfur, the 2 common oxides of sulfur, sulfur dioxide and sulfur trioxide. और मैं बताता हूँ, ये ना बिल्कुल समझ लो, ferrous sulfate के हीटिंग इफेक्ट है. A compound which on heating gives you 2 oxides of sulfur has to be ferrous sulfate. ये याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट में बार बार बताऊंगा. यहाँ पर Fe2O3 जो E है वो रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन ऐसा कुछ देता है. येलो सोल्यूशन जो होता है वो FeCl3 का होता है. बताया हूँ फेरिक सॉल्ट फॉर येलो. ये जो फेरिक सॉल्ट है ये H2S के साथ में रिड्यूस होकर के FeCl2 बन जाएगा. ये रिड्यूस होकर के FeCl2 बन जाएगा और H2S will get oxidized to sulfur. Realize FeCl3 अगर इसको ऑक्सीडाइज करके FeCl2 बनाता है तो दिस विल गेट ऑक्सीडाइज टू सल्फर. यहाँ पर येलो पीपीटी है वो सल्फर है, इसको G हम लोग बोलेंगे यहाँ पर. ये नेचुरली H है और FeCl3 विद थायोसाइनेट, Fe-thiocyanate ब्लड रेड. मेरे को लगता है कि सबको समझ में आता है. तो ये सारा का सारा इंडिकेट कर रहा है कि सल्फेट है, आयरन है. और ये जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है दिस कुड वेरी वेल बी ferrous sulfate dot 7H2O, ferrous sulfate dot 7H2O, which is green vitriol. Remember, this is such a key statement. Something on heating giving you 2 oxides of sulfur could very well be, could not very well be, is always going to be ferrous sulfate. मैं बताता हूँ.
फेरिक सल्फेट जो होता है ना, मैं बताता हूँ, फेरिक सल्फेट जो होता है ना, फेरिक सल्फेट को हीट करने से सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है खाली। इट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फेरिक सल्फेट को हीट करने से खाली सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है। तो दो ऑक्साइड दे रहा सल्फर का हीट करने से, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों है। एंड आई टोल्ड यू, हीट करने से फेरस सल्फेट ही सिर्फ दो ऑक्साइड ऑफ सल्फर देगा, फेरिक सल्फेट सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। बाकी फेरिक क्लोराइड इज येलो, इट गेट्स रिड्यूस टू समथिंग ग्रीनिश बिकॉज फेरस सॉल्ट्स आर ग्रीन, H2 इज a reducing agent, उसको रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। येलो पीपीटी सल्फर है, फेरिक cyanide इज अ ब्लडेड कलर, इट इज कंपाउंड I, एंड आई थिंक यू नो वी आर डन विद प्रॉब्लम C2। प्रॉब्लम C3 भी तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करके रखना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं देखता हूँ इसका रिकॉर्डिंग करके तुम लोग के साथ में शेयर कर दूंगा एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। रिकॉर्डिंग वाला क्लास में मैं बुला लूंगा अगर किसी को आना होगा तो, but more like a moral responsibility. I'll be solving problem 3 tomorrow, and this much for the time being. Thank you so very much. Anything you want to talk to me, anything you want to tell me, any doubt you have, else we'll call it a day. Stay happy, stay healthy. बच्चे लोग कुछ पूछना है? चलो फिर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।